Hello students, in this video we are going to compare 8 August and 3rd August IELTS exam, the easiest exam out of these two exam dates, along with the complete prediction of both these IELTS exam. Along with this, you can check on the screen, first time in history. So we are also going to discuss with you this most important update of the IELTS exam, that is the first time in the history. So make sure to watch the video till the end to know the complete details. इस वीडियो में हम आपके साथ 3rd अगस्त और 8 अगस्त दोनों एग्ज़ाम का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों एग्ज़ाम में से कौन सी डेट बेस्ट है और इस अगस्त मंथ की कौन सी बेस्ट डेट है। दोनों एग्ज़ाम की कंप्लीट ऑनेस्ट एक जेन्युइन प्रेडिक्शन एंड द ईजीएस्ट एग्ज़ाम आउट ऑफ दीज टू। सो ये सभी थिंग्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले वी विल डिस्कस विद यू द राइटिंग लेवल ऑफ द IELTS एग्ज़ाम, दैट इज़ 3rd अगस्त। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क 1 and the task 2 topics are shown on your screen. Along with this, the most common writing task 2 topics. Similarly, the writing level of the 8 August IELTS exam, it will also be moderate. The common writing task 1 and task 2 topics for both academic and general are shown on your screen. Now moving on to the speaking module. जो speaking के लिए इस टाइम जो most trending topics चल रहे हैं, those are 11 to 20 मक्कड़ May to August final version. ये topics 10 most important है. If you have a time, you can prepare 1 to 30 topics. These are the most common topics repeated these days. Now, before discussing the prediction of the remaining modules and the comparison between two exams, let's discuss with you the most important update which we have told in the thumbnail. That is the first time in history. आपने कितनी बार सुना होगा कि IELTS के एग्ज़ाम रिपीट होते जा रहे हैं। जी हाँ, इट्स कम्प्लीटली राइट। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो लास्ट 8 एग्ज़ाम हो चुके हैं कॉन्टीन्यूसली स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of May एंड इट गोज़ अप टू 20th of July। जो लास्ट 8 एग्ज़ाम हो चुके हैं डेट हैव बीन रिपीटेड फ्रॉम अवर मटीरियल। आप देख सकते हो 20th जुलाई का जो IELTS का एग्ज़ाम है उसमें रीडिंग का पैसेज, उससे पहले 11th जुलाई के IELTS के एग्ज़ाम में रीडिंग का पैसेज विद 14 क्वेश्चन सेम एंड ऑन द सेम डे द राइटिंग टास्क 2। उससे पुराने एग्ज़ाम जो प्रीवियस एग्ज़ाम है 6 जुलाई, 29 जून, 22 जून को भी जो IELTS का रीडिंग पैसेज है विद क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट हो चुका है एंड द same day writing task 2 statement also. Previous exams that were 8 June, 1 June, 25th May means जो last 8 एग्ज़ाम हो चुके हैं continuously they have been repeated from our material. तो जो भी स्टूडेंट्स को इस डिटेल्स के ऊपर डाउट है, for their clarity we have provided you a link of a Instagram page. दिस इज़ अवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल। इसके ऊपर आपको इंडेक्स ऑफ PDF करके एक हाईलाइट दिख रही है। उन सभी फाइल्स का इंडेक्स हमने पिन करके इस हाईलाइट में रखा हुआ है। मींस वो 2022-3 की पोस्ट हैं, उनको पिन करके हमने इस हाईलाइट में रखा हुआ है। वेन एवर द एग्ज़ाम रिपीटेड फ्रॉम अ मटीरियल, तो हम आपको जस्ट ये बताते हैं कि इस नंबर से द रीडिंग पैसेज एंड द राइटिंग टास्क आर रिपीटेड एंड जो भी इंडेक्स है पहले पुरानी पोस्ट हैं। तो दो स्टूडेंट्स हु यूज़ द इंस्टाग्राम दे वेल नो कि इंस्टाग्राम आपको जब भी आप पोस्ट कर देते हो एडिट करके उसमें कुछ भी रीराइट करने की ऑप्शन नहीं देता। सो देयर इज़ नथिंग फेक दैट कैन बी डन ऑन दीज पोस्ट। सो ऑल द डिटेल्स वी हैव शोन टू यू प्रीवियस इन दिस वीडियो आर 110% जेन्युइन। अभी जो स्टूडेंट्स डिफरेंट अगस्त की एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको एक अच्छा गेसवर्क, एक प्रेडिक्शन चाहिए। सो फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस ट्रेनर हम आपको एक बेस्ट मटीरियल देते हैं उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम डेट के लिए जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है। एज यू कैन लुक द डिटेल्स ऑफ दैट मटेरियल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे से प्रेडिक्शंस बाय करेंगे उनको पास्ट एग्जाम का मटेरियल एज एन ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मींस यू हैव टू जस्ट पे फॉर द प्रेडिक्शन मटेरियल। पास्ट एग्जाम का मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पास्ट एग्जाम का मटेरियल भी इतना ज़्यादा बल्क में कंटेंट नहीं है। दीज आर 33 रीडिंग्स एंड जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फिल करते हैं नियरली दे फिल द एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 days बिफोर प्रायर टू द एग्ज़ाम डेट। तो अगर आप प्रेडिक्शंस को कवर करते हो यू कैन ईजिली कवर दीज प्रेडिक्शंस विद इन 3 to 4 days। आपके पास रिमेनिंग 10 से 15 days द टाइम यू कैन सेव, उसमें आप पास्ट एग्ज़ाम की 33 रीडिंग्स हैं। 33 रीडिंग मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 100 पैसेजेस। तो वो हर रोज़ की एक रीडिंग भी सॉल्व करोगे तो विद इन 10 days यू कैन कंप्लीट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फाइल। तो ये फाइल्स आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी।
And the combination of these two material, that is the prediction as well as the past exam material, is one of the best content which will help you to crack your IELTS exam. Now moving on to one of the biggest update, that is the best opportunity that students can avail to crack their IELTS exam. That is, as you can look on the screen, crack your IELTS exam in just 2500. This is one of the biggest opportunity to the students who are going to appear on the distinct exam dates of month August. So as you can have a look on the screen, the 15 days classes, the cost is 3000, past exam material for 500 rupees, and the prediction of this particular exam date, it would be 600 rupees. So total cost is 4100 rupees, and as an offer we are going to provide you all these things in just 2500 rupees. This is a special package from our side. Now you can have a look on the screen of the results of the online classes students. With just the 15 days to 1 month classes, students have improved. There is a great difference between the band scores before our classes and after the classes. The students are enrolled not only from the Punjab but from the distinct states of India, and they have improved from a band of 1 till 2.5 band in different modules after 15 days to 1 month classes. Moreover, these are the results of the recent last 3 to 4 exam dates that were 22nd June, 6th of July, 8th June, 13th June, and all these results are just possible because of the classes provided by our online classes trainers that are IDP certified trainers. Now again the point is, some of the students again have a doubt that the content, especially of the IELTS online classes band improvement we have shown, can also be fake. Now we are providing you the link of IDP, that is IELTS result check IDP. Here if you will fill the complete details that are shown on your screen, the given name, the surname, the date of birth, and the passport number of the student. If the student have appeared in the 10 exams, he have given 10 attempts, all the results will be visible to you on this particular website. So whatever we have shown in this video, on all those TRFs, the student's name, surname, and date of birth is provided. The thing that is only hidden is the passport number, and it is not possible to disclose that passport number of students on social media. Those students who have a doubt, they can contact us on the given numbers, and they can have a passport number of that student, and they can check the clarity, and they will have a clarity of the content that we have posted, whether the results are genuine or fake. Now moving on to the predictions of the remaining modules. Talking about the listening module, the overall level of listening will be moderate. The speed can be somewhat fast. So what we recommend the students is, you can practice some of the listening test at a speed of 1.2 to 1.25. And shifting towards the reading module, the reading module level on these both exam dates will be moderate. One of the passage from the three, especially the second or third passage, could be from a level of moderate to tough, but the overall level on these both exam dates will be moderate for the reading module. Now comparing these both exam dates, that is 3rd of August and the 8th of August, we recommend you is the best date between these two or of whole of the month is 8th of August. The reason being, as we have shown you already in this video, that both the exam date results of July and June, the first exam that was of both academic and general, this was the best result of the last 2 months, that were the 8th June and 6th July. You can check the results of the students, their band improvement. We have posted nearly 10 results for the 6th July exam and 7 to 8 results for the 8 June exam. So these results, the students' best results, amazing results, were on the date first of the last 2 months, that were July and June, the academic and general first date of both these months. So similarly, the first date of August month is 8th of August, that is of both academic and general. So this is the reason why we recommend you that you can choose this date. The academic and general both exam date is almost easy, and this exam is also going to be conducted on Thursday. Whenever the exam is on Thursday, so exam usually comes from a level of easy to moderate, it never comes to be tough. So we recommend you is the best date of the whole month is on 8th August, that is Thursday. Those students who are prepared, they can choose this
exam dates, those students who need some time, they can go with the 24 August exam date. So now, as we have shown you some results before, you could check that one of the student or some students got only 5.5 bands in the listening module. No matter they have achieved a band of 7.5, 8 in reading, but sometimes they got a very low score, that is 5.5 in listening. There are some reasons for this. As you can check on the screen, that there are some specific rules which you should take care when you transfer the answers on the listening booklet. So you should always transfer the answers in the upper case and neither touch the above line nor the below line. आपने कभी भी ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन के साथ टच नहीं करना आंसर्स को, nor you have to write the answers on the right side on the marking section. So always write the answer in between the lines, and apart from this there are some more rules which you can check on your screen, and make sure to always look for these rules and avoid these mistakes so as to achieve a high scores in the listening module. तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज दिख रहा है. इस पेज के ऊपर जितना भी एग्जाम रिपीट हो चुका है, ऑल द डिटेल्स विद द इंडेक्स ऑफ पीडीएफ फाइल्स, स्टूडेंट्स रिव्यूज ऑन डिस्टिंक्ट एग्जाम डेट्स विद अलॉन्ग विद लोकेशन जहां भी उन्होंने एग्जाम दिया था, विद द प्रूफ, सभी डिटेल्स यहां गिवन है. इसके अलावा जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अपार्ट फ्रॉम दीज डेट्स विच वी हैव शोन ऑन योर स्क्रीन, सभी इस पेज के ऊपर मैंशनड है. जो भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का डाउट है, वो इस पेज को एक बार आप विजिट करके आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आइल्स के रिगार्डिंग, हमारे मटेरियल या क्लासेस के रिगार्डिंग, आप यहां चेक कर सकते हो. And make sure to follow this page also. Thanks for watching the video and good luck to all the students who are going to appear on the different exam dates in the month of August. Thank you.